Now, on the basis of mode of nutrition, organisms are classified into two groups. There are two groups. First one is autotrophs, organisms that can prepare their own food. Example, plants. Heterotrophs, second group, organisms that take in food prepared by other organisms like plants. Example, human beings. Means all animals which are dependent on others are heterotrophs, and plants, only plants are able to make their own food, so those are autotrophs. Now let's come to the process by which autotrophs means plants can prepare their food. I hope now you can correlate with your class 6. So this you have studied there. So the process by which plants can prepare their food is known as photosynthesis. So in previous class you just studied, I can say, only one define. सिर्फ एक definition थी, not more explanation, but in this we are going to study many things about it. So let's start with photosynthesis. So autotrophs can prepare their food in leaves. Leaves are known as food factory or kitchen of plant by the process of photosynthesis. Now here also, please split term of photosynthesis. Photosynthesis. Photo means light, synthesis means to prepare. दिस यू कैन कोरिलेट, आप कोरिलेट कर सकते हैं, जैसे फोटोग्राफ. फोटोग्राफ, आप कोई भी पिक्चर क्लिक करते हैं, आप अंधेरे में क्लिक नहीं कर सकते. सो व्हाट इज दिस फोटो? फोटो मीन्स light. Here also photo is light, synthesis means to prepare. So the process by which plants can prepare their food in the presence of light, right? So now let's come to the define. The process of making food by plants in the presence of sunlight by using carbon dioxide, water and minerals. So we know that plants need these many things. But from where they are getting these things? So now we are going to study from where and how they are getting all these components for the process of photosynthesis. So first thing which is required, or you can say must, बहुत ज़रूरी है, carbon dioxide. So plants are taking carbon dioxide from air through stomata. Plants कहाँ से ले रहे हैं carbon dioxide? From air. Air से ले रहे हैं, but किस part से? किस part से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं या फिर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं? वो पार्ट कहलाता है स्टोमेटा. So stomata are the tiny pores present on the surface of leaves. Pores means छेद, छिद्र in Hindi you can say, minute holes which are almost invisible, जो हमें normal eyes से नहीं दिखेंगे, but अगर हम उसे माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखें एक लीफ की लेयर को, तो हमें इजीली दिख जाते हैं. So stomatas are very small, very small, that we can see only under the microscope. So this is a structure of stomata under microscope. Microscope के अंदर stomata आपको कैसा दिखेगा? That I have drawn here. This is a open stomata. ये stomata खुला हुआ है, means this opening is open stomata. इसके through ही exchange of gases होता है. So this outer layer is epidermal cell, जिसकी वजह से leaf या फिर stomata green दिखता है. These dotted cells are chloroplast. Then kidney bean shapes जो आपको दो दिख रही हैं, that is guard cell. Guard cell control करता है opening and closing of stomata. If guard cell is damaged, stomata will not open or close. Like हमारे घर में दरवाजे होते हैं entry exit के लिए. So here in leaves for the entry and exit of gases, or you can say water, we have stomata. Now let's come how this exchange takes place. Carbon dioxide when entered into stomata when stomata is open, and same oxygen will release. Here
Carbon dioxide is useful, and for plants oxygen is a waste material. Oxygen plants कभी use नहीं करते हैं, they are using only carbon dioxide. So carbon dioxide plants के लिए useful है, oxygen उनके लिए waste है. Now let's come to second component, second most important component, that is water and minerals. So from where plants are getting water and minerals? As you all know, we are giving water in roots. हम पानी कहाँ डालते हैं? रूट्स में. लेकिन खाना कहाँ बनता है? लीव्स में. सो मीन्स वाटर रूट से लीव्स तक जाना चाहिए. सो हाउ दैट वाटर इज मूविंग, और वाटर के साथ मिनरल्स कैसे जाते हैं? सो जस्ट सी, हैव अ लुक ऑन दिस डायग्राम. आई हैव यूज्ड टू टाइप ऑफ कलर्स. ब्लू डॉट्स आर फॉर वाटर, पिंक डॉट्स आर फॉर मिनरल्स. पानी के साथ मिनरल्स मिक्स हो जाते हैं जिससे वो बनाते हैं सैप. सैप यू कैन से इज अ स्टिकी मटेरियल. आपने कभी किसी लीफ को अगर क्रश किया है या किसी पौधे को कभी तोड़ा है तो उसमें से बड़ा स्टिकी वाटर निकलता है. दैट इज अ सैप. Sap is a mixture of water and minerals. So this sap will enter through the root hairs, two roots, tertiary roots, secondary roots, primary roots, then stem to leaves. Right? So by this plants are getting minerals and water. Now next important thing, as I told you earlier in the beginning, photo means light. Plants are getting light from sunlight only. So okay, sunlight चाहिए. But have you ever think, प्लांट तो दिन में और रात में हमेशा खाना बनाते रहते हैं. दिन में हमारे पास सनलाइट है, प्लांट्स के पास सनलाइट है, दे कैन प्रिपेयर फूड. बट व्हाट अबाउट नाइट? रात को क्या? आप अपना सेलफोन सिर्फ दिन में यूज़ कर सकते हैं, रात में यूज़ नहीं कर सकते. हाउ वी कैन यूज़ आवर सेल एवरी टाइम? बिकॉज वी आर चार्जिंग इट. हम उसे चार्ज करते हैं. एंड इलेक्ट्रिसिटी इज स्टोरिंग वेयर? इन बैटरी. सो ऑब्वियसली प्लांट्स में भी कुछ बैटरी टाइप चीज़ होनी चाहिए, दैट इज स्टोरिंग सनलाइट. दैट पार्ट इज chlorophyll. Chlorophyll, these are the green pigments which are present in the plants. And what is the role? काम क्या है chlorophyll का? Chlorophyll is used to store sunlight. Chlorophyll का काम है sunlight को trap कर लेना, पकड़ लेना. तो chlorophyll अपने अंदर sunlight को स्टोर करता है ताकि जो प्लांट है वो उसे किसी भी समय यूज कर सके. Either it is raining, cloudy, winters, anything, किसी भी सिचुएशन में रात में सनलाइट को यूज किया जा सके, फोटोसिंथेसिस हो सके. So for that most important thing is chlorophyll, which is storing sunlight. Function of chlorophyll is storage of sunlight. Now how this process takes place? If I tell you in a single equation, अगर मुझे सिर्फ आपको एक single equation में बताना है, so how can I tell? Carbon dioxide they are taking from, let's come here, carbon dioxide they are taking from air, water from soil, minerals from soil, chlorophyll है ही, plants are already green, and sunlight from sun. So everything they are getting at the top. So now have a look. Carbon dioxide when combines with water in the presence of sunlight, it will form carbohydrate. Carbohydrate is food of plant. And what is the waste material? Waste material क्या है इसमें? Oxygen. Oxygen is the waste material produced in the process of photosynthesis. Now carbohydrates you have studied in class 6. मीठे होते हैं, इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, गुड फॉर हेल्थ. बट कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ मैनी टाइप्स. जिसको आप कहते हैं मीठा होता है, एनीथिंग विच इज स्वीट इन टेस्ट, दैट इज ग्लूकोज. फाइन. ग्लूकोज. मिल्क मीठा होता है, दैट हैव lactose, maltose and many more.
बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें हो सकती हैं।